class 10th, very most important question. Annie's mother never show her interest in any friend. एनिस की मदर ने कभी भी अपनी बेटी, उनकी बेटी का नाम क्या है, एनी फ्रेंड, अपनी बेटी पे कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं किया. एंड रिमेन इनडिफरेंट टू हर, और वो हमेशा अलग अलग सी रहती थी. तो डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ एनी मदर. एनी की मदर का करेक्टर हमें डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ एनी मदर. एडिट फ्रैंक इन द लाइट ऑफ हिज रिमार्क. तो चलिए आंसर्स क्या है देखिए. उनकी मदर का नाम क्या है, एडिथ फ्रैंक. ओके, तो एडिथ फ्रैंक इज नॉट अ केयरिंग मदर. एडिथ फ्रैंक इज नॉट अ केयरिंग मदर. एडिथ फ्रैंक इज नॉट अ केयरिंग मदर. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. एज शी नेवर, बार बार मैं आपको वीडियो को स्टॉप करने और राइट करने को ही बोलूँगी, वो इसलिए क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है ऐसे करके 90% एंड अबव मार्क्स गेन कर सकते हैं. ये एक शॉर्ट एंड फास्ट तरीका है लर्निंग का. एज शी नेवर शोड एनी इंटरेस्ट इन एनी. शी किसके लिए आया है, शी आया है उनकी मदर के लिए, एडिथ फ्रैंक के लिए. एज शी नेवर शोड, as she never showed any interest in Annie. As she never showed any interest in Annie. वीडियो को स्टॉप करें and write it. And remained indifferent and insensitive to the need of her teenage daughter. Teenage daughter मतलब उसकी जो young daughter है Annie, उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो हमेशा इनडिफरेंट और इनसेंसिटिव थी. अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको मीनिंग होगा सहानुभूतिहीन. यस. रिमेन इंडिफरेंस एंड इनसेंसिटिव. वो अपनी बेटी को लेकर के इनसेंसिटिव और इनडिफरेंट थी. दैट इज कॉल्ड अ व्यवहारहीन. तो वंस अगेन, एडिथ फ्रैंक इज नॉट अ केयरिंग मदर. वंस अगेन राइट इट. And she never showed any interest in Annie. She never showed any interest in Annie. And video को stop करो and write it. And remain indifferent and insensitive to the need of her teenage daughter. And remained indifferent and insensitive. Remain indifferent and insensitive to the need of her teenage daughter. To the need of her teenage daughter. वीडियो को stop करें and write it. She always accuses Annie of being messy and hold her responsible for anything wrong. She always accuses. वो हमेशा से एनी को एक्यूज करती रहती थी, गलत ठहराती थी. तो she always accuses Annie. She always accuses Annie of being messy. कोई भी गलती होने पर. Of being messy means कोई भी गलती होने पर. She always accuses Annie of being messy. She always accuses Annie of being messy. Annie में एक कैपिटल आएगा बिकॉज नेम. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. एंड होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग रॉन्ग. एंड होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल. एंड होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल. हमेशा उसको जिम्मेदार ठहरती थी फॉर एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत होने पर. एंड होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग रॉन्ग. एंड होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग रॉन्ग. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. और डिससेटिस्फाइड वुमेन. कैसी वुमेन थी, डिससेटिस्फाइड. और डिससेटिस्फाइड वुमेन एडिट फ्रैंक also come across as being unsympathetic and tactless. A dissatisfied woman added Frank also come across as being
Unsympathetic, spelling U-N-N, sim, S-Y-M, sim. Unsympathetic, P-A-T-H-E, P-A-T-H-E-T-I-C. Unsympathetic and tactless. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. Annie accuses her mother. Annie accuses her mother to initiating fight with. एक एग्जांपल बता रही है कि जब उनकी मदर जो है वो किसी से लड़ रही थी, मिसिस वैन डाउन से लड़ रही थी. तो तब भी देखो, जब जैसा तुम अपने बच्चों को ट्रीट करोगे रिस्पॉन्स तुम्हें वैसे मिलेगा. जैसे तो एनी ने भी गलती आरोप लगा दिया, बेटी ने भी आरोप लगा दिया अपनी मदर पर कि मेरी मम्मी ने ही इनिशिएटिंग शुरुआत की है इस लड़ाई की. तो एनी एक्यूजेस हर मदर ऑफ इनिशिएटिंग फाइट विद मिसेस वैन डॉन. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. एनी थिंक्स देयर इज नथिंग अबाउट हर मदर. एनी थिंक्स there is nothing about her mother that is actually motherly. Annie thinks there is nothing about her mother. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. There is actually motherly and often wishes she could have had a caring and warm mother. And often wishes and often wishes and often wishes she could have had a caring and warm mother. उसकी क्या विश थी? एंड ऑफन विशेस, एनी की विशेस थी एंड ऑफन विशेस शी कुड हैव हैड अ, वो चाहती थी शी कुड हैव हैड अ केयरिंग एंड वार्म मदर. ठीक टर्म वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. एज एनी से डिस्पाइट माई थ्योरीज एंड एफर्ट्स. एज एनी से, इस तरह से एनी ने, एज एनी से डिस्पाइट माई theories and efforts, अपनी थ्योरी को डिस्क्राइब किया. एज एनी से डिस्पाइट माई theories and efforts. वीडियो को स्टॉप करें, राइट इट. आई मिस every day and every hour of the day having a mother who understand me. मतलब वो उस दिन को उस दिन को मिस करती है कि जब उसकी माँ उसको समझेगी. आई मिस every day. I miss every day and every hour of the day having a mother. I miss every day. वीडियो मैं बार बार स्पीक इसलिए कर रही हूँ, आप भी करेंगे साथ, ठीक है. बोर्ड आपने देने हैं, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ. I miss every day. I miss every day and every hour of the day having a mother who understand me. वीडियो को स्टॉप करें, राइट इट. In any diary's entry, Mrs. Frank is mentioned almost inclusively in instance when she is the cause of any anger and frustrations. मतलब in Annie's diary entry, Mrs. Frank is mentioned almost inclusively in instance when she is a cause of any anger and the frustrations. In Annie's diary entries, Mrs. Frank मतलब उनकी मदर को एनी ने मेंशन किया है ऑलमोस्ट इंक्लूसिवली इन इंस्टांस, उन एग्जाम्पल्स में उनको इंक्लूसिव किया है when she is a cause of any anger and frustration. Mrs. Frank is mentioned almost inclusively in instance when she is cause of any anger and frustration. जब वो अपनी बेटी के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुई थी. ठीक है. तो एनी ने अपनी डायरी में अपनी माँ को मतलब अपनी मदर को जो मेंशन किया था वो एक एग्जाम्पल्स की फॉर्म में कि वो जो हमेशा अपनी मदर को, वो हमेशा एनी अपनी मदर से एंगर रहती थी और फ्रस्ट्रेशन रहती थी. तो उस वे में उसने अपनी
मदर अपनी डायरी में अपनी माँ को मेंशन किया था। एनी हार्डली कमेंट ऑन हर मदर्स पॉजिटिव ट्रेट। एनी, वंस अगेन देखो बेटा यहाँ से लिखिए, इन एनीज डायरी एंट्री Mrs. Frank is mentioned almost inclusively in instance. Mrs. Frank is mentioned almost inclusively in instances. Video को stop करें and write it. When she is the cause of any anger. When she is the cause of any anger and frustration. video को stop करें and write it. Annie hardly comment on her mother positive trait. एनी बड़ी मुश्किल से अपनी माँ की पॉजिटिव ट्रेट्स पे कमेंट कर पा रही थी, मतलब लिख पा रही थी। तो एनी हार्डली कमेंट ऑन हर मदर्स पॉजिटिव ट्रेट। video को stop करें and write it. Annie continue to feel Annie continues to feel alienated from her critical mother and irrecoverably deems her unfit. Once again, Annie continues to feel alienated, alienated. जैसे करेंगे स्पेलिंग ALIE, alienated, alienated from her critical mother and irrevocably deems her unfit.